Hello my dear students, I am Ms. Mitrakshi Mayurika Sahoo, lecturer in Electronics and Telecommunication Engineering from Govt Polytechnic, Kendrapada. I welcome you all to my video lecture session on the very interesting topic, video segmentation. Okay, so this is your last chapter of the 6th semester subject, image and video processing. So let me discuss in detail. See, in this video lecture, we will cover introduction, video processing, video segmentation, short boundary detection, types of short boundary, temporal segmentation, motion based pattern segmentation, and finally video object detection and tracking. Okay, in this completion of this video lecture, after completion of this video lecture, you student will able to know all these above things which I have said just before, and you have a basic background knowledge about this. Okay, so let's start in detail. This is your first slide. In this slide, let me introduce what is image, video, and then we will go to video processing. Okay, image is the representation of visual perception such as photograph or 2D image. Alright, so image is nothing but it is a representation of visual perception. Just student, you are keeping your photographs like this. Okay, so this is 2D in nature, or the image is 2 dimensions in nature. Okay, so now let's discuss video. Video is the collection of images. Technically we will term these images as frames. Okay, so video is the collection of images or frames displayed in fast enough frequency so that human eyes can perceive the continuity of its content. Clear? So in this basis, जदि मु ये example टा तुमको देबी तो तमे माने better बुझी पारिबो. Clear? तो देखो एठी तमे माने स्क्रीन रे देखि पारथिबो एटा होची गोटे इमेज तमे माने परसीव करथिबो इट इज एज अ इमेज, बट एक्चुअली एटा कोडो गोटे वीडियो रो किछि पार्ट्स और किछि शॉर्ट्स. क्लियर? तो तमे माने देखो एठी गोटे हॉर्स रो रनिंग वीडियो और एटा गोटे हॉर्स राइडिंग वीडियो जोथरे ईच गोटे गोटे पिक्चर तमे देखि पारिबो. एठी टोटल 15 टा पिक्चर अछि of which are nothing but the frames of a video. Clear? जदि एटा इंडिविजुअली आसुची तो सेटा को हमें कौन कहूचे फ्रेम्स और पिक्चर्स और 2D फोटोग्राफ्स और 2D पिक्चर्स. क्लियर? तो जदि एटा को बो फास्ट फॉरवर्ड करबी ताले कौन हबो सेठी गोटे टाइम पैरामीटर इंट्रोड्यूस हबो. क्लियर? देखो टाइम पैरामीटर इंट्रोड्यूस होची माने वीडियोटा होची 3 dimensional thing. That means the 2 dimensions are from the picture and another 1 dimension, that is time. Okay, so a total jinsota hochi gote video ra frame. Clear? So let's proceed. This is video processing. तो तमे माने कहि परिबो आमे video processing काहे की करछे. First definition को जिबा. This is a video processing means modifying some features of a video like editing or adding some effects. Clear? See, in any type of processing actually we are modifying some features or सित्रे हमें किसी changes करूँ. Clear? तो video editing रे कौन हुए और video processing रे कौन हुए आमे किसी parameters जेमती कि एठी तमे देखि परिबो एटा होची गोटे edited image आउ एटा होची raw image. Clear? तो raw image रे कौन अछि यार कंटेंट टा और तार क्लैरिटी दैट मच बेटर नहीं. तो आफ्टर प्रोसेसिंग यू कैन सी हियर तार क्वालिटी टा बहुत भलो अछि. क्लियर? तो दिस एटा केमती हेछि बाय एडिटिंग और एडिंग सम इफेक्ट. ऑलराइट, सिम्पली तो मैं देखि परिबो इन दिस सेकंड पिक्चर एक्चुअली दिस इज द फ्रेम ऑफ ए वीडियो. तो एटा हला बिफोर प्रोसेसिंग यू कैन सी एठी इमेज रो क्वालिटी और से फ्रेम रो क्वालिटी इते बेटर नहीं, बट आफ्टर प्रोसेसिंग यू कैन सी हियर द वीडियो और द फ्रेम इज जस्ट लाइक अ एचडी फ्रेम. क्लियर? तो एटा को कहंती वीडियो प्रोसेसिंग. आमे जहाँ भी एडिट कले जहाँ भी इफेक्ट ऐड कले एटा को कहा जाए वीडियो प्रोसेसिंग. ऑलराइट, सो नेक्स्ट
we will discuss video segmentation, which is our topic of discussion. Clear? See, video segmentation means breaking of images or the frames into meaningful units. Let me share one example here. तुमको गोटे example देले daily life रो गोटे practical example देले I think तमे मैंने better बुझी पारिबो. Suppose you have ordered a pizza pie for you. Okay, तमे गोटे pizza pie order करछो तम पई. But do you think तमे से pizza टाको गोटे single bite रे complete करिबो? Definitely your answer is no. Why? Because you can take that much of pizza bite, that much of pizza in a single bite which your mouth can process. Okay, तम माउथ रो कैपेसिटी अनुसार से जेतिकी प्रोसेस करि परिबो तमे सेतिकी ही थरो करे कंज्यूम करिवो. क्लियर? सिमिलरली वीडियो इज अ वेरी लार्ज फाइल और गोटे बहुत बड़ फाइल जोटा कि आमे स्टोर कला बेले इटसेल्फ एटा गोटे बहुत अधिका मेमोरी स्पेस कंज्यूम करे. क्लियर? तो तुम मैंने देखि पारिबो. सो आमे कोन करछे वीडियोटा को डिवाइड करछे जस्ट लाइक तुम पिज्जा बाइट बाय बाइट नोछ. ओके, तो आमे वीडियोटा को डिवाइड करछे. दैट डिवाइडिंग और ब्रेकिंग द इमेजेस और फ्रेम्स इनटू मीनिंगफुल यूनिट्स इज नोन एज वीडियो सेगमेंटेशन. I think all of you are clear about it. So let's proceed. The types of video segmentation you can see here. There are two types of video segmentation. One is temporal segmentation, another is semantic segmentation. So in temporal segmentation we will study about short boundary detection, and in semantic segmentation it deals with scene detection. Okay, so as per your syllabus, in this video lecture we will discuss about the short boundary detection, but एटा तुमको एठी कहिबाटा मु बेटर भाबुची कि एठी शॉर्ट आउ सीन विषय हमको टिके जानिबा दरकार. ओके, तो शॉर्ट आउ सीन माने कोन आमे नेक्स्ट किछि स्लाइड रे शॉर्ट विषय रे डिटेल रे डिस्कस करिबा. तो लेट मी से यू कि व्हाट इज सीन. सीन इज नथिंग बट a sequence of shots. A sequence, it is a sequence. Then जमती कि तमे माने कुआ गोटे वेरी गुड फाइट सीन हैला कि रोमांटिक सीन हैला कि गोटे क्लाइमैक्स सीन हैला एटा जमती तमे कहूचो सीन. So scene is a sequence. That means it is a combination of shots of similar type. Okay, so let's see what is short boundary detection. Okay, before going to it, we will discuss what is one shot, what is session, and why we are detecting actually the short boundary. What is its necessity? Okay, so तुमको ए एग्जांपल टा दबा पई मु गोटे लाइव शूटिंग सेट रो एग्जांपल जो जी देबी तमे माने बेटर बुझिबो. तो देखो गोटे लाइव शूटिंग सेट रे कोन हुए डायरेक्टर पर्टिकुलरली चारिटा जिंस रिपीटेडली यूज करंती. तमें देखि शुणी थी ये जिनसटा समहाउ देखि थी भी डायरेक्टर किसी जिनस एमती थाए पर्टिकुलरली चार्टा वर्ड से बेसी सेटा को रिपीट करिकरी कहंती. से कहंती माने सेथरे से किछि इंस्ट्रक्शन दियंती. ओके, सो से चार्टा वर्ड कोन समस्त एंसियस थिबो सुनियो पई. व्हाट आर दोस फोर वर्ड्स? एक्चुअली दोस फोर वर्ड्स आर लाइट, कैमरा, एक्शन एंड कट इट. ओके, सो द फोर वर्ड्स आर लाइट, कैमेरा, एक्शन एंड कट इट. फाइन, तो यहाँ तो समस्ते शुणी थी. देख जिते बड़े डायरेक्टर कहते कि कैमेरा ता माने होची ही इंस्ट्रक्ट्स द कैमरामैन टू बी रेडी विथ हिज कैमरा. दैट मीन्स टू मेक द कैमरा ऑन. सिमिलरली जिते बड़े से कहते कट इट ता माने होची कोन ना कैमराटा ऑफ हबो और ही इंस्ट्रक्ट्स द कैमरामैन टू मेक द कैमरा ऑफ. क्लियर? So you can see here एबे हमें एठी हम कॉन्टेक्स्ट को फेरिबा ए जिंसटा कोन से एग्जांपल टा को हमें कोरिलेट करबा हम पाठ सहित. देखो ए पर्टिकुलर पोजीशन रे सपोज डायरेक्टर कहिसंती कि कैमरा ऑन ता माने कोन कैमरा एठू ऑन हिची और से कैमरा बोली इंस्ट्रक्शन देइचंती त एठू कैमरा ऑन हिची. ऑलराइट, सिमिलरली देखो ए पोजीशन रे और पर्टिकुलरली ए टाइम रे इंस्ट्रक्शन दिया हिची कि कैमरा ऑफ. सो the time of the activities performed from camera on to camera off is known as one session. You can see here
session is nothing but the activities performed in the time lapse between a camera on and a camera off. जेतेबेले गोटे कैमेरा ऑन करा जाउची और पर्टिकुलरली गोटे शूट पाई जेतेबेले कैमेरा ऑन होउची एटा हला सेही समय आ जेतेबेले शूट हे सारुची माने जहा कंटेंट कैप्चर होबा कथा हे सारची ताले एटा हला सेही वेरी मोमेंट जोठी कैमेरा ऑफ हेची. सो पर्टिकुलरली एई सेशन टाको आमे कहि परिबा आवर फर्स्ट सेशन. ओके, सो दिस जो कैप्चर होची जो कंटेंट गुडा को द कैप्चर कंटेंट ऑफ ए सेशन इज नोन एज शॉर्ट. So we named it as short 1. Okay, so similarly this is our short 2 and this is our short 3. I think you are clear. So एबे हमर एक्चुअली जोटा पढ़िया कथा सेटा होची शॉर्ट बाउंडरी डिटेक्शन. ओके, सो शॉर्ट बाउंडरी कोन देखो एठी तमे बुझिबा पई मु गोटे गैप मेंटेन करछि और गैप देछि बट एक्चुअली देयर इज नो सच गैप बिटवीन शॉर्ट्स. माइंडेड there is no such gap between two shots. Okay, so see here the short 1 ends here and the very moment short 2 is initiated. So the time at which short 1 ends or one shot ends and another shot begins, that is known as short boundary. You can see here for short 2 and short 3 this is your short boundary. Okay, then you can question me what is why we are defining the short boundary. See, for any type of video processing or for video segmentation or for anything, any type of processing, we need to know where this short boundary is. Okay, so that we can distinguish one scene from another or for other processings. Okay, so it is very much needed to define the short boundary. Clear? So let's proceed. Types of short boundary. Okay, short boundaries are also known as cuts. Okay, these are known as cuts. So there are two types of cuts. You can see here, one is hard cut, another is soft cut. So let me discuss it in detail. You can see here, this is the frames of an interview video. Okay, you can see here. If I will say you this is the first frame and this is the consecutive frame, then see this is the content is completely based on or the here is the focus is on the lady interviewer. Okay, in the first shot the lady interviewer's face is focused, but you can see in the second picture or in the second frame the person whose interview is to be taken, his face is focused. सो मु तुमको ए कॉन्टेक्स्ट जदि कहबी कि ए जिनसटा को मु फास्ट फॉरवर्ड करी तुमको देखैबी एटा टीवी स्क्रीन रे ताल तमे कोन देखिबो फर्स्ट रे देखिबो लेडी इंटरव्यूअर फेस जस्ट ता पर शॉट रे और ता पर स्लाइड रे और ता पर फ्रेम रे तमे देखि परिबो जो पर्सन रो इंटरव्यू निया होची तांको फेस. सो इट इज एन अब्रप्ट चेंज. ओके, सडनली चेंज होची, ग्रेजुअल नाही, सडन चेंज. A face टा देखिबो सडनली एटा देखिबो. You can mark it also. So this is known as hard cut. So hard cut is nothing but the abrupt change in contents between shots. Clear? Okay, so let me discuss what is soft cut. You can see here, this is one example of a sunrise sequence. So if you can compare any two frames, any two consecutive frame, then you can get that the change is very less or there is a similarity or much more similarity between two consecutive frames. You can see in any frame, any two consecutive frame, you can see the similarities. Okay, so soft cut is nothing but the gradual change in content between shots. Okay, this is known as soft cut. Now let me discuss temporal segmentation. See, temporal segmentation provides necessary information to derive the layered representation where the video data is reduced to a few layers. Okay, once again I am telling temporal segmentation provides the necessary information to derive the layered representation where
the video data is reduced to a few layers. If I can tell you, जदि आम गोटे डिस्कस करबा कि गोटे डे एक्टिविटी, there are a lot of activities carried on in a particular day or in a single day. तो ये कौन होची देख मुझे एग्जांपल्स नहीं पटे किसी कंटिन्यूटी भी अच्छी तुम देख पार. सो देख ये हूँ फ्रेम गुड़ाक गोटे वीडियो रो माने गोटे डेज लाइफ लो गोटे डे रे आम केते गुड़े एक्टिविटी परफॉर्म करछे. ओके तो से गुड़ाक हूँ सपोज आम एति एग्जांपल नहीं. ओके तो आम जदि या इवेंट वाइज सेगमेंट करबा. ओके यू कैन सी हियर मल्टीपल इवेंट्स एगुड़ाक सब हूँ मल्टीपल इवेंट्स तुम देखिपार. पर्टिकुलरली गोटे वीडियो रु एगुड़ाक कैप्चर कराई और एगुड़ाक सेगमेंट आउट कराई. ओके ए इनफॉरमेशन आमे जो प्रोसेस रे पाउचे दैट इज नोन एज टेम्पोरल सेगमेंटेशन. आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर. देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज मोशन बेस्ड पैटर्न सेगमेंटेशन. ओके सो मोशन बेस्ड माने तुमको ये पर्टिकुलरली किसी गोटे बेसिस दिया होची जहाँ बेसिस रे तुमको डिवाइड करिवार अछि वीडियोटा. ऑलराइट सो ये कौन होची द पार्टीशनिंग ऑफ एन इमेज और द फ्रेम into regions of homogeneous 2D or apparent motion. Okay, that is known as motion based segmentation. And here the homogeneous means continuity of motion field. What does it mean? समस्त पदे एटा बुझी पार नथिबा. ओके ऑलराइट हम तुमको बुझौची. देखो सपोज तुमको गोटे फ्रूट दिया है ताको कट करिया को कुहाई तो तमे माने केमती कट करिवो. तुमको गोटे किसी बेसिस दरकार जा बेसिस रे कट करिवो और गोटे एक्सेस दरकार कट इट हॉरिजॉन्टली और कट इट वर्टिकली किसी गोटे इंस्ट्रक्शन दिया हबो. सो देख ये मु तुमको गोटे एग्जांपल दउची सेटा जेमती भी कहली तुमको गोटे बेसिस अछि एठी हमें कोन करछे मोशन बेसिस रे याकू डिवाइड करछे. ऑलराइट तो सेटा केमती हबो देखो सपोज मु तुमको गोटे एग्जांपल दउची गोटे हाउस फ्लाई रो. हाउस फ्लाई माने एटा माने गोटे जगह रो आ गोटे जगह को मूवी करथिबो. ऑलराइट suppose the frames of the video are just like this. Okay then the image alignments are देखि परछो तो एटा होची तारा image alignments. Okay so all these are some intermediate processing not required for this और हमर एठी कार डिस्कशन पई सेटा दरकार नै. so let's go to the last part that is pattern segmentation. मु एठी तुमको देखेबी ए दिन छोटा देखो एठी मल्टीपल सेगमेंट रे टोटल फ्रेम टा डिवाइड हे जाई. ये सर मल्टीपल सेगमेंट रे तमे देखि पारथिबो ए सेगमेंट गुडा सब डिवाइड हेछि. तो एटा केमती डिवाइड हैला डिवीजन तो तमे जानि परछो बिकॉज़ तमे माने सेगमेंटेशन करछो. तो एटा डिवाइड हैला को बेसिस रे डिवाइड हेछि अकॉर्डिंग टू द 2D होमोजेनियस मोशन. ऑलराइट तो एटा होछि हमर पैटर्न सेगमेंटेशन. क्लियर. सो नेक्स्ट वी विल गो टू आवर लास्ट स्लाइड that is video object detection and tracking. Okay so let me discuss first video object detection. What we are doing here actually we are verifying the presence of an object in image sequence. Okay मु तुमको कहिछि वीडियो होछि गोटे कलेक्शन ऑफ इमेजेस. ओके तो से सीक्वेंस रु हमको वीडियो ऑब्जेक्टा डिटेक्ट करिवार अछि फाइंड आउट करिवार अछि. फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर ए टोटल टा होची सेम कॉन्सेप्ट रो एग्जांपल हैला. तो तमे देखो इन द फर्स्ट वीडियो और फर्स्ट एग्जांपल फर्स्ट फ्रेम रे दिया हेची अ कार इज रनिंग इन अ हाईवे. ओके तो एठी रनिंग ऑब्जेक्ट कोटा हैला और वीडियो ऑब्जेक्ट कोटा हैला डेफिनेटली कार. तो आफ्टर प्रोसेसिंग यू कैन सी हियर द कार इज हाइलाइटेड नथिंग मोर. ओके सी इन द सेकंड एग्जांपल आल्सो a man is holding a book. Okay तो वीडियो ऑब्जेक्ट कोटा जेतु एटा गोटे वीडियो ता माने लॉट्स ऑफ फ्रेम्स आसीबो. तो फ्रेम रु डिफाइन करिवार अछि ए जो पर्सन जे छिडा आइचंती आ गोटे बुक होल्ड करचंती सेटा ही हाइलाइट होबा दरकार. ऑलराइट आ देखो एठी आउटपुट रे सेटा ही हाइलाइट हे के आछि. ऑलराइट दिस इज नोन एज वीडियो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन. फाइन. सो नेक्स्ट वी विल गो टू ट्रैकिंग. Tracking means keeping a eye on something. That means आमे कहा ऊपर गोटे नजर रखुचे सेटा होची ट्रैकिंग. ऑलराइट तो एठी ट्रैकिंग को आमे केमते डिफाइन करिबा देखो
Tracking means monitoring an object's spatial and temporal changes during a video sequence, including its presence, position, size, shape, etc. That means एठी आमे कौन करछे सपोज गोटे जिनस मूव करूची गोटे वीडियो रे तमे देखुछ तो तमे सेटा केमती जानिबो देखो तुमको कौन करियार अछि तार टेम्पोरल आउ स्पैटियल चेंजेस मार्क करिवार अछि केमती ऑन द बेसिस ऑफ तार साइज चेंज होउची कि नाही शेप चेंज होउची कि नाही सपोज इट इज मूविंग देन मूविंग इन व्हिच डायरेक्शन all these things. Okay, this is known as tracking. So next we will study about applications of all these things. देखो सकाळु उठिबा ठारू रात्रि सोइबा पर्यंत सेल्फी रे तमे दिन जाउथबो आई थिंक सो समस्ते तमरो फोटो आ वीडियो सहित डायरेक्टली कनेक्टेड बट तमे रॉ फोटो गोटे नेले सेटा शेयर करूछो कि डेफिनेटली सेतरे किछि प्रोसेसिंग करूछो yes or no similarly video HD video नहेले आजिकल केही वीडियो ही देखु नांती yes or no so तो तमे देखि परथिबो एप्लीकेशन सब आडे अछि बट किछि पर्टिकुलर फील्ड अछि जोथरे ए वीडियो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और ट्रैकिंग पार्टटा मच मोर अप्लाइड और यूज्ड ओके सो सेही फील्ड गुडा को होछि वीडियो सर्वेलेंस रोबोटिक्स 3D रिप्रेजेंटेशन एक्सेट्रा these are some of the applications okay तो आउ तो तमे देखिथिबो प्राय almost all field रे apply होउची but these are some of the applications okay so this is all about our subject matter and this is time for your self assessment okay I have enlisted some questions for you can see the first question is consider the provided frames and find which type of cut is this see listen students see here there are two frames these are your two frames okay you have to consider these two frames and you have to justify your answer which type of frame is this in the video lecture I have already told you that there are two frames or there are two cuts that means a soft cut and a hard cut you have to say or you have to define which type of cut is this before that you have to go to the content part or you have to study the content of these two things analyze that and answer okay and the second question is why video processing is required means the need of video processing okay and the third question is what are the applications of video object detection it just before in the previous slide I have already discussed so prepare your answers and prepare well for your exam. Finally, thank you so much for your patience for listening and communicate your queries in my WhatsApp number. This is my WhatsApp number. Feel free to ask me any questions for this in this matter. So finally, stay home, stay safe and keep learning. Thank you. झीटीए तो माटी आम सामाजिक और पारिवारिक जीवनर मूल कथाटी से माने आगकू गले आगकू जीव संसार आम झील मैंने आ पुओंकठू पछरे नाहांती एबे तो बदली गलानी समय बदली गलानी जुग से झील माननकू आहुरी आगकू नहीं आत्मनिर्भरशील और स्वावलंबी करने ओडिशा सरकार सुदक्षा योजना रे सरकारी ITI माध्यम संपूर्ण मागणारे जोगई देउछंती सबु प्रकार उत्कृष्ट मानर वैषयिक ज्ञान कौशलर तालीम एबे आम झील रहिबे सबुठू आगरे सबुठू उपरे मु सफल मु कुशली मु सुदक्षा